the choice of movies till now whichever you've done started with commercial, went to offbeat, and then you suddenly stop doing things, and then choice of films. I mean, how are you choosing your films, Sanjay? See, as an actor, you have a buffet of films. You know, if you're lucky, the buffet is large and big, and the choices are many. Or if you're not that lucky, then choices come ho jati hain. So, out of that, you actually see that, okay, do you see yourself in this film, that film, and things. So combination of the director, the story, your role, these things play an important part. And like you said, I started with, okay, maybe Pyar Mein Kabhi Kabhi, did Daman, tried my hand in so-called mainstream cinema, Tera Jadoo Chal Gaya, and then went on to do, Plan, and I kind of realized that I want to do a bit of both, something which pays my bills and something which I really want to do. So then comes a film like whether Pinjar, Thu, My Brother Nikhil, Jhankar Beats. So I wanted a mix of all, because people coming from outside, you don't have that privilege of getting that buffet being very large. So you got to be picky and choosy in what you do. I've heard this answer before also from you. Because my question to you again is, sorry, I'm against you on this one. I'm because आपकी हर पिक्चर में आपको अप्रिशिएशन मिलता है, तो ये जो भी आप बोल रहे हैं ये तो बड़ा होना लाजमी है, क्योंकि हर डायरेक्टर आपके साथ वर्क करना चाहेगा कि हर जगह तारीफ मिल रही, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऑफर नहीं आते हैं. Is it that you become very choosy? किस किस्म के ऑफर आते हैं वो भी that see you wouldn't know, I would know किस किस्म के ऑफर आते हैं. I think the entire ball game is changing. तारीफ हो या ना हो, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को ना आए. The entire dynamics of film industry are changing, and आपने notice किया होगा हाल ही में कुछ इतनी बड़ी फिल्में आई हैं. Irrespective of merit or demerit, they're all big hits, big successes. So what is the logic? Logic is the marketing muscle, behind it. So awareness, marketing, visibility. तो आदमी कहता है यार चलो एक बार जाके देख लेते हैं. Opening weekend business, what happens in the West is happening here. So actually it's a very dangerous time, because a merit film can go unnoticed, and a film which doesn't have any merit can be noticed but rejected, but definitely noticed, but you've ended up spending that 150 rupees. So तारीफ की वजह से रोल्स मिले ऐसा नहीं होता. बॉक्स ऑफिस पे वो इंटायर पैकेजिंग वर्क करती है, तब आपको रोल्स मिलते हैं. एंड फेयर एनफ, बिकॉज बिजनेस है, सो बिजनेसमैन नीड टू लुक एट देयर बैलेंस शीट फर्स्ट. एग्रीड. बस एक पल के साथ क्या गलती होगी? तेरे बिन सॉन्ग का जो आज जिस जगह पे वो सॉन्ग खड़ा है, उससे अच्छा कोई मार्केटिंग हो ही नहीं सकता. मैं बहुत टेक्निकल हो जाऊँगा और मेरे नो अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दैट, बट आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, एक जूता बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. अगर आप वो किसी नाइकी, रीबॉक वगैरह को दे देते हैं, आपकी अच्छी प्लेसमेंट होती है, आप मेन रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी मेन दुकान में जूता लगा हुआ है, तो आप वो जाके देखते हैं और ख़रीद लेते हैं. उसी क्वालिटी का जूता बैक स्ट्रीट पे होगा तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, और मे बी इट विल गो अननोटिस्ड. सिमिलरली गुड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द की. नाउ अब coming back to what we were talking about, Bas Ek Pal. Film, great publicity, song was big. People would have come in, the target audience would have come in, but our distributor unfortunately could not retain good shows. If you have a morning show or a day show, so target audience is for the night show, because 7 films have released on that Friday, or 6 films. So bigger the distributor or bigger the not bigger or less, smaller the film, the bigger the distributor, he'll retain shows. अभी आप देखिए कोई बड़ी फिल्म आती है, छोटी सारी फिल्में बाहर हो जाती हैं, बिकॉज वो 20 शोज़ एक मल्टीप्लेक्स में ले लेते हैं. 5 ऑडी हैं, 5 शोज़ हैं, 25 शोज़ आपके एक थिएटर में चल रहे हैं. सो इंडिपेंडेंट सिनेमा कैसे सर्वाइव करेगा? फिर आपके जैसे एक्टर्स कैसे सर्वाइव करेंगे जो बिलीव रखते हैं माय ब्रदर निखिल बनाने में, जो बिलीव रखते हैं बस एक पल बनाने में या झनकार बीट्स में काम करने में?
वैसी फिल्में या ऐसी फिल्म जो मैं जहाँ पर आप जिस सेट पे बात कर रहे हैं सलाम इंडिया, ये टोटल अपने मेरिट पर काम करती हैं. मुश्किल है, इट्स एन अपहिल टास्क, बट देयर इज़ नो अदर वे आउट. अदर वे आउट इज़ टू सेल आउट टू अ बिग स्टूडियो एंड देन दे विल इंश्योर. अभी आप देखिए, छोटी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, घोंसला का घोंसला और डोर, तो बड़े बड़े बैनर से तो दे कुड इंश्योर कि शोज अच्छे मिले एंड देन द फिल्म परफॉर्म्स. बट अ फिल्म गेट्स अ फेयर चांस. बट अगर अच्छी फिल्म है और आपके पास वो मार्केटिंग मसल नहीं है, तो फिल्म माइट नॉट गेट अ गुड चांस. हैज संजय मेड हिज ओन गैंग, whom सेट गैंग जिनके साथ वर्क करना बहुत कंफर्टेबल लगता है? नहीं, मैंने अगर गैंग बनाया होता तो मैंने 15 नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 15 या 16. सो वो गैंग, उसमें से एक या दो रिपीट हुए. बाकी तो हर एक बार एक नए डायरेक्टर के साथ काम किया. और actually the established filmmakers haven't worked with me, so probably they don't like my style of acting, or they don't know what to do with me, but I have only worked with new people. And you also try, become more or less like a producer also, if I'm I not just did mistaken. like one film, My Brother Nikhil, that वो भी इस वजह से क्योंकि हमें कहानी बहुत अच्छी लगी थी, हमें बिलीफ था कि ये बननी चाहिए और बनाना चाहते थे, और प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा था, तो उस वजह से we produced it ourselves, you know. And Basikpal, we didn't produce, but we did the production design. क्या होता है when few like-minded people get together, तो आप एक किस्म का काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, सो आप हर एक डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं. सो उस लेवल से बाकी जो मैं फिल्में कर रहा हूँ, प्योरली एज एन एक्टर. So you want to wear the producer shoe now, full? No, not my first choice. I'm first an actor, and then if I feel that I really feel so passionate about a film and which is not being produced outside, then I will look at the possibility, definitely. Let's talk about your coming film. Speed, I believe, is generating a lot of hype, and there are other films also which are coming. Let's talk about a bit about every film. See, Speed has been under production now for some time, and that's one film. Then there's another romantic comedy called Kabhi Ab Kabhi Down. That's again with a new director, Perizad and me are in it, which is complete. There's Salam India, this one, and then there is another film which is tentatively titled Anubhav, which is being made by a director called Rajiv Nath. He's a national award-winning director, and it's very, very interesting and bold subject. Yeah. Okay, not being harsh, but you want to do solo hero film, or you are happy with a character role also? Solo hero film, I really don't plan like that. If I'm doing a Speed, then I'm also doing a Kabhi Up Kabhi Down, because it's a two-character film, you know. Or I'm playing a key character in Salam India, which is a cricket film. So you're a part of it, you know. It's your film because you're a part of it. It's not from your point of view only. So those kind of things, I think it's a mix. I don't think so much, and in today's day and age, जब आप देखते हैं hoarding में, there's like there are films like 6 couples, 7 couple. So I think value for money, people find more कि भाई ज़्यादा actors दिख जाएं उसी ticket price में. So that is one, but it's totally script specific. No ego hassles. No ego hassles, not at all. I mean, I'm doing Speed, or previously I've done Plan, or done Jhankar. So it was all a bunch of people. कभी But गुस्सा but यही होता है कि it's कुछ scripts आपको अच्छी लगती हैं, वो with the burden is on your shoulders, so the job is tougher. So but I enjoyed doing all. It's really never an issue with me. कभी गुस्सा आता है संजय कि I mean in front of a mirror that I perform good, come on damn it, give me that, and then also you not getting that fly, that push towards the high notch of the career. कभी गुस्सा आता है, you feel angry and you want to switch over to something else? मुझे गुस्सा नहीं आता उस वजह से कि I feel untapped. There might be a discontentment, but not anger, because I know the dynamics. एक मेरी एक advantage भी है, जो disadvantage भी है, कि I understand the business. So I realize the dynamics क्या है, एक brand की value क्या होती है, और सब लोग
इस देश में ब्रांड के पीछे भागते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्रिकेटर के लड़के का नाम क्या है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको सुनील गावस्कर के लड़के का नाम पता होगा. सो एक ब्रांड बन जाता है एक. सो और हमारी फॉर जनरेशन्स वी हैव फॉलोड दैट, राजा का बेटा राजा. सो वी हैव फॉलोड दैट एंड गिवन देम द प्लेटफॉर्म. सो उसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इट्स इन आवर ब्लड स्ट्रीम दैट वी इंडियंस एक्ट लाइक दैट, वी रिएक्ट लाइक दैट. वी एक्सपेक्ट कि हाँ यार, शेर का बच्चा तो शेर ही होगा. तो लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है. संजय के सन और डॉटर क्या होंगे? अभी तो है नहीं, जब होंगे तो उनकी मर्जी और उनकी किस्मत. थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा हूँ. इंडस्ट्री में आपका फेवरेट डिज़ाइनर बिटवीन मनीष मल्होत्रा एंड विक्रम फर्निस कौन? कि मैंने तो दोनों के साथ मैंने विक्रम के साथ काम किया है, लेकिन आई थिंक फॉर विमेन मनीष इज़ रियली गुड. विक्रम की मैंने ज़्यादा क्रिएशंस ऑन विमेन देखी नहीं है, बट इट्स द रॉन्ग question to the wrong person, because I work with everyone. Are you obsessed about something? I'm obsessed about, yes, I'm obsessed about dedication. And something which you don't leave your house without? My handkerchief.